Namaskar. Doordarshan welcomes viewers to this special telecast. This telecast comes to you live from Parliament Complex. This is the fourth session of the 12th Lok Sabha of the country. The Honorable President, Shri Narayanan, will address the joint session of this fourth session of the 12th Lok Sabha. नमस्कार, ये प्रसारण आप तक पहुंच रहा है संसद भवन के परिसर से। संसद भवन नई दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। 6 एकड़ के परिसर में संसद भवन बना है, जिसके केंद्रीय कक्ष में आज राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। The Honorable President has arrived and is being escorted by the Chairman Rajya Sabha, the Prime Minister, the Speaker Lok Sabha, the Minister for Parliamentary Affairs and Secretaries Generals of the two houses. And he is being conducted to the Central Hall in a procession where he will address the joint session. संसद के दोनों सदनों को एक साथ राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाना संविधान के तहत बहुत ही पुनीत, गरिमामय और औपचारिक कार्य है। इस अवसर के मुताबिक गरिमा और शिष्टाचार बरता जाता है। Please. Honorable members, it gives me great pleasure to address the first session of both houses of Parliament in 1999. An important session is ahead of you. I wish you the very best for the successful completion of the budgetary and the legislative tasks before the Parliament.
As we approach a new century and a new millennium, our hopes, aspirations, and expectations for the coming era should be matched by sound and determined efforts now. The people have bestowed on this Parliament a unique opportunity to make the transition from this century to the next. With pride in India's many achievements since independence, we should together accomplish the unfulfilled tasks and face the challenges of the future with self-confidence and determination. Parliament, as the country's apex elected body and beacon of the world's largest democracy, has the greatest responsibility to channel the national energies toward these efforts. As the golden jubilee of our republic draws near, I am confident that the honorable members would discharge this responsibility with a unity of vision and direction. I am happy to note that the National Agenda for Governance, which is the common policy covenant of the coalition government, is being implemented faithfully. In the past 11 months, my government has acted decisively on many fronts to promote people's welfare, accelerate economic development, strengthen internal and external security, and develop deeper bonds of friendship and cooperation with India's neighbors and other countries. Taken together, these initiatives have instilled a new sense of self-confidence among Indians, increasing our ability to effectively face the challenges in the present and the future. The historic initiative of the government has been the successful nuclear test at Pokhran on May 11th and 13th last year, making India a nuclear weapon state. The government took this step after a careful appraisal of our national security needs. India's nuclear doctrine is based on minimum deterrence, and it is firmly opposed to an arms race in this region. India has declared that she will never use her nuclear weapons against a new non-nuclear nation and will never resort to a first strike against any nuclear weapons nation. We shall redouble our efforts to champion a cause that has always been sacred to us, namely securing world peace through speedy, universal, comprehensive dismantling of all weapons of mass destruction. Continuing the national consensus on foreign policy matters, the government has been working vigorously for global nuclear disarmament on a comprehensive and non-discriminatory basis. Some countries have imposed technology restrictions on us. The nation is meeting this unwarranted action with determination, and I am confident that we shall emerge stronger and more self-reliant. I would like to felicitate the armed forces, our nuclear scientists, the Defense Research and Development Organization, and the Defense Production Units for their concerted efforts in developing indigenous capabilities to meet the requirements of advanced technologies and equipment for our defense and developmental needs. The nation expresses its gratitude to the brave Jawans and officers of the armed forces and other paramilitary forces who have laid down their lives in fighting proxy war
unleashed by terrorists. The country recognizes the sacrifices of those posted in places like Siachen and other remote border areas in the service of the nation. The role of the defense forces in aiding the civilian authorities in handling exigencies like cyclone in Kutch and in relief and rescue operations for victims of national calamities has been exemplary. The government has set up the National Security Council. This will go a long way in providing a holistic and in-depth analysis of military, economic, and political threats to India and help in evolving an integrated approach to decisions impinging on national security. The government is firmly committed to uphold secularism, which has deep roots in our society and policy. The recent incidents in Gujarat, Madhya Pradesh, and Orissa have caused us anguish and concern. However, these have to be seen as an aberration which do not reflect the national ethos. The government is fully committed to the protection of minorities. State governments have been advised to quickly apprehend culprits in all such cases. The government's record in maintaining peace and communal harmony is shown by the fact that in 1998 had the fewest deaths due to communal violence in the last 10 years. Ensuring internal security is a primary duty of any government. I note with considerable satisfaction that terrorism and subversive activities in various parts of the country are being effectively contained, owing to the sustained pressure, vigil, and concerted actions of the security forces and the state administration and the active cooperation of the people. There has been a conspicuous turnaround in the law and order situation in Jammu and Kashmir during 1998. This is reflected, among other things, in the recovery of tourist traffic, which had virtually dried up in the preceding decade. The government will continue its efforts to strengthen peace in the state and revive the normal economic, social, cultural, and educational activities. It is committed to ensure the early return of the many Kashmiris to their homes and hearths in the wake of the restoration of normalcy. In the Northeast, public security is being constantly improved and upgraded. The modernization of state police forces, emphasizing the supply of vehicles, equipment, arms, and ammunition, has been taken up to improve the law and order situation. This is being accompanied by increased assistance for economic development. The government of India is considering repeal of the illegal migrants discrimination by determination by Tribunals Act 1983. The decision to hold the national games in Imphal is the indication of the many possibilities that exist for accelerating the process of emotional integration and bringing the people of the Northeast into the national mainstream. The non-resident Indians are a part of the great global Indian family. Their emotional, cultural, social, and economic links with India are a source of great strength to us. The government has approved the
persons of Indian origin PIO card scheme. This will permit visa-free entry and offer other facilities to persons of Indian origin who are citizens of other countries. The National Agenda for Governance calls for an accelerated and well-balanced economic development as a precondition for fulfilling the goal of Berozgari Hatao, eradication of unemployment. The government has set the target of an annual GDP growth rate of 6.5%. The Indian economy, however, has had to face a very adverse situation owing to the general slowdown in the global economy, as illustrated by the sharp decline in global trade and marked crisis in many countries around the world, including those in Southeast Asia. This led to a fall in capital flows to emerging markets. Many inherited bottlenecks in the domestic economy compounded these external challenges. In spite of these external and internal odds, the economy has fared reasonably well, and our GDP growth rate should be one of the highest among the developing countries. Despite considerable volatility in the currency markets elsewhere, the Indian rupee has remained stable within a manageable exchange range. Our foreign currency reserves have grown to US dollars 27.9 billion as on February 17, 1999. The excellent response of the resurgent India bonds, which mobilized US dollars 4.2 billion, is a clear manifestation of the non-resident Indians' continuing commitment to India. Presently, the finances of both the central and state governments are under severe strain. The aggregate general government deficit has increased in recent years. Besides having inflationary potential, this is causing severe consequences for interest rates, investment, and growth. It is therefore critically important for both central and state governments to restore health to their finances and by reducing the revenue and fiscal deficits. This calls for tight control over wasteful and low priority expenditure and determined efforts to mobilize resources, including appropriate cost recovery policies. The government has acceded to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Patent Cooperation Treaty. This will improve industrial climate by increasing information flow, provide better protection for Indian inventors, and encourage technological development. The Insurance Regulatory Authority Bill 1998 is similarly intended to strengthen the insurance sector and enable it to seize the opportunities that globalization offers. Our space program continues to grow from strength to strength. The IRS-P4 satellite for remote sensing is being launched this year along with INSAT-2E. The next launch of the PSLV will also carry the Korean KitSat and the German TopSat satellites. This will be another milestone in the development of space program. Success in this area
holds great promise for better telecommunications and broadcasting services, as well as for distance learning, mapping of land and water resources, and crop forecasting. Agriculture is a mainstay of our economy and the lifeline of majority of our population. I extend my hearty felicitations to our hard-working Kisans who, in spite of many odds, have continued to increase farm production and feed the nation. I am happy to inform the members that the expected milk production of 720 lakh tons in 1998-99 will make India the world's largest milk producer. Increased growth in production of food grains, pulses, and other crops will play an important role in the revival of the economy. It is a matter of pride that India now ranks among the top 3 countries in wheat production. The government is formulating a new national policy on agriculture to strengthen our agriculture and agro-based industries. The policy seeks to boost irrigation, especially through small and medium projects, increase the viability of small and marginal farmers, and enhance farm productivity through better management of natural resources and introduction of technological and institutional changes. The focus will specifically be on raising food production in the country's vast rain-fed areas and in eastern and northeastern region. Efforts will be made to expand and revitalize agricultural cooperatives and other rural credit institutions to enable them to seize the opportunities of economic liberalization. The policy also aims at maximizing production in horticulture, floriculture, medicinal plants, and afforestation, especially to increase our exports in these areas. Management of prices of agricultural commodities is a critical need since it concerns both farmers and consumers. One of the major impediments in this area has been the lack of accurate and timely information. A national crop forecasting center has been set up to provide advance warning of critical commodities about their supplies and prices. A special cell has been created in the Ministry of Food and Consumer Affairs to closely monitor prices of essential commodities. The cell is servicing a high-powered price monitoring board which is meeting every week to review the price situation. A bill to amend the Essential Commodities Act to check hoarding and black marketing more effectively is being introduced in this session of Parliament. Optimal usage of water is essential to our economic progress. Improper use of water, besides causing economic loss, can lead to degradation of lands and the environment and cause increased tension. A national commission is currently preparing an integrated plan for the development of water resources for multiple use. Its report, which is expected this year, will recommend short-term and long-term measures to achieve integrated and efficient management of the nation's diverse water resources. The progress in developing a consensus in respect
or the long-running Kaveri water dispute last year was a triumph of the cooperative and national spirit. The importance of this breakthrough lies in the possibility of following a similar approach to help resolve other long-standing interstate river disputes that are holding up many big development projects. The government accords high priority to the rapid development of infrastructure, which is a key to accelerated growth in all sectors of the economy. The Task Force on Infrastructure, set up under the aegis of the Planning Commission, has finalized the blueprint for the construction of a 6-lane national integrated highway project with an east-west corridor linking Silchar to Saurashtra and a north-south corridor linking Kashmir to Kanyakumari. It incorporates and further extends the earlier Golden Quadrangle project linking the 4 metros of India, Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Expressways of international standards will be built at suitable stretches. Work has already begun on this most ambitious infrastructure project since independence. Significant resources will be mobilized for implementing it from multiple points in the country. Private sector participation is being enabled through build, own, transfer schemes. The Task Force on Infrastructure has prepared a draft of the National Integrated Transport Policy that seeks to maximize the synergy between railways, roads, ports, airports, and inland waterways. Based on the recommendations of the task force, the government has decided to undertake a major exercise to modernize and expand the airports in the country. As a first step, 5 airports, Mumbai, Delhi, Calcutta, Chennai, and Bangalore, will be corporatized. Information technology presents the greatest single developmental opportunity for India in the 21st century. The entire edifice of tomorrow's knowledge-based economy and society will rest on its foundation. India's natural advantage in establishing global dominance in information technology is today widely recognized. This recognition is based on the shining success already achieved by our IT professionals and entrepreneurs, both in India and Indians working abroad. Consequent to the recommendation of the Task Force on Information Technology, the government has taken a number of decisions to give a big boost to software development with the goal of achieving exports of US$ 50 billion by 2008. An action plan to make India a major center for hardware design, manufacture, and exports is also on the anvil. For the first time, an internet service provider policy has been announced to accelerate the spread of internet services in the country. In addition, the government plans to unveil major initiatives to promote computer training and information technology-based education, creation of Indian content on the internet, especially in Indian languages, universal use of IT in administration, banking, and the commercial sector, and in utilities, and IT for rural development
through wired villages projects in many states. The government recognizes the crucial role that telecommunications will play in making India's dreams in information technology come true. Accordingly, it has set up a group on telecommunications that is finalizing a new telecom policy. The policy will, inter alia, take into account the revolutionary phenomenon of the convergence of computers, telecom, television, multimedia, and consumer electronics. It will aim at vastly increasing tele-density in India, especially in rural areas, bringing high-speed connectivity to critical sectors of the economy and ensuring affordable television services. These objectives will be achieved in a better competitive environment by creating a stronger regulatory framework. Major advances are being made in the power sector due to a proactive approach of the government to remove bottlenecks in clearing a large number of pending power projects. Very soon, many independent power projects will attain financial closure, leading to their expeditious construction. The government recently held a conference of chief ministers and power ministers of states specifically to discuss faster progress in this critical infrastructural sector. I am happy to note that more and more state governments are setting up regulatory commissions, restructuring their electricity boards to cut down transmission and distribution losses, and facilitating the inflow of expected investments. There has to be a national consensus that electricity generation, transmission, and distribution, being commercial activities, user charges should be recovered fully. If there is any conscious decision to charge less, subsidies have to be provided for by the concerned state's government in a transparent manner. India is committed to the peaceful use of nuclear power. The work of the Kaiga Atomic Power Unit 2 and the Rajasthan Atomic Power Project Unit 3 continued. These units are expected to become critical this year. Kalpagam reprocessing plant, the third and the largest reprocessing plant built by us, was dedicated to the nation in September 1998. The government has continued its commitment to the promotion of non-conventional energy. India now ranks fourth in the world in its use. Besides, as India is the largest producer of cane sugar, we are implementing the world's largest bagasse-based cogeneration program in our sugar mills. A home of their own is a dream of every Indian family. In pursuance of this, government has formulated a new housing and habitat policy 1998 that will facilitate the building of an additional 20 lakh houses a year. This will also create employment opportunities for skilled and unskilled on a large scale, besides giving boost to our steel, cement, and construction material industries. After wide consultations with the interests involved, major roadblocks in the path of the housing industry have been removed and others are on the way to removal. The government has decided
to create a technology upgradation fund for strengthening the competitive advantage of the Indian textile industry. The scheme will commence from April 1, 1999. Separately, the Ministry of Agriculture would soon launch a cotton technology mission. Small-scale cottage and village industries, as well as the handloom and handicraft sectors, generate a lot of employment. To help the small-scale sector, the Interest on Delayed Payment to Small-Scale and Ancillary Industrial Undertakings Act 1993 has been amended. The Prime Minister's Rozgar Yojana has also been revised to give the program an added impetus. The National Agenda for Governance, committed to free industry from bureaucratic control. The government has de-licensed industries like coal, lignite, petroleum products, sugar, and certain bulk drugs. It has also decided to liberalize technology imports by allowing automatic clearance for projects appraised by financial institutions, public sector projects, and projects of private companies that have a good track record. The government is also reforming public sector undertakings through restructuring, rehabilitation, disinvestment, and strategic sale. A separate cabinet committee will oversee and expedite decisions of disinvestment and restructuring plans. The second National Commission on Labor has been set up after 3 decades to suggest rationalization of existing labor laws in the organized sector and an umbrella legislation for ensuring minimum protection to the workers in the unorganized sector. The Commission will consider the emerging economic environment involving rapid technological change that necessitate quick changes in methods, timing, and conditions of work. It will recommend changes in existing laws to bring them in tune with the future labor market requirements. It will also recommend improvements in the effectiveness of the measures relating to social security, occupational health, and safety, minimum wages, and linkage between wages and productivity. It will suggest safeguards and facilities required for women and handicapped workers. Ensuring the well-being of all our citizens is the first duty of any government. Investment in literacy, education, particularly primary education, health, sanitation, and drinking water is a main priority for the government, as these determine the quality of life of our citizens and improve India's standing in the Human Development Index. In the last budget, the government considerably increased the allocation for social sector. This commitment will continue. In addition, the government will take further measures to strengthen the social safety nets for the poorest sections of our society. Pulse polio immunization is one of the greatest healthcare success stories in recent years. Encouraged by the tremendous experience gained in this campaign, the country should now aim to achieve zero incidents of polio by the end of 2000, as per the goal set by the World Health Organization. NGOs are being involved in creating awareness about public health.
To promote Indian systems of medicine, the Department of Family Welfare has incorporated Ayurveda in the reproductive child health program. The nation has a particularly grave health challenge, namely the rapid spread of AIDS. The country has drawn up a draft national AIDS policy and national blood policy. This will check the proliferation of this dreaded disease, improve services for the care of the people living with AIDS, both in hospitals and at homes, and provide an enabling socio-economic environment so that all sections of population can protect themselves from HIV infection. Drug addiction has been an important factor in the spread of HIV. The government is also committed to pursue the programs for drug de-addiction and rehabilitation of persons who have been drug addicts. The Ministry of Welfare has remained as the ministry, has been renamed as the Ministry of Social Justice and Empowerment on Dr. Baba Saheb Ambedkar's birthday last year. To promote self-employment among scheduled castes and scheduled tribes and backward classes, the government has more than tripled the authorized capital of the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and National Backward Classes Finance and Development Corporation. More steps will be taken for their speedy economic development. The government has launched the Rural Women's Development and Empowerment Project in 6 states. A national policy for empowerment of women is finalized. A new initiative in child development would be the setting up of a national commission for children. The government has evolved a national policy for older persons to address the emerging aspirations of many older people in healthcare, shelter, welfare, life, property, and financial security. The Rehabilitation Council of India has been reorganized to standardize and expand the training of rehabilitation professionals working with disability. A specially designed Prime Minister's program for the mentally challenged has been launched, covering 15,000 children. More will be covered later. A national trust for the welfare of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation, and multiple disability will be established soon after the bill being introduced in the Parliament in the current session is passed. In the development of the social sector, however, is not dependent on increased financial resources alone. Investment of better and more committed administrative and managerial resources is equally critical. There is a great need to sensitize the government machinery at both the central and state levels. I must emphasize, however, that no tangible progress will be made unless the officers and employees concerned adopt a participative approach to involve the people in the implementation of these schemes. The sustained investment in higher education and other facilities is beginning to pay off. Many young Indians are doing exceedingly well in India and abroad. As India's economy grows, more opportunities will be available for our youth to show their mettle. In sports too, the momentum is picking up. The medal
tally at the Asian Games last year, including the gold medal for hockey, is the highest since 1982. There is immense sports talent in our society of nearly 100 crore people. We must intensify our efforts to discover and promote this talent to improve India's standing in international sports. The government has set up a commission to review administrative laws. The commission has presented its report, which is under consideration. The government is also planning to bring forward a Freedom of Information Bill. Both houses of Parliament have frequently discussed electoral reforms. To impart much needed momentum to them, the government constituted a committee headed by Shri Gupta, a senior and respected member of Parliament, to suggest measures on state funding of elections and other connected matters. The committee submitted its report on January 14, 1999. It suggested partial funding of elections in kind by government to the candidates of recognized political parties. The government will finalize its recommendations in consultation with all parties. Strengthening the Panchayat Raj system is at the heart of the challenge to revitalize Indian democracy. India lives in our villages. The quality of governance has therefore to be judged by the quality of the government-citizens interface at the grassroots. Many schemes have been formulated to improve the functioning of these panchayats, especially by educating its members to work better. I must note here that both the need and the scope for improvement in this area are immense. The Ministry of Rural Affairs and Employment, in consultation with the state governments, is restructuring many of the schemes for the betterment of lives of the rural poor. The restructuring must give panchayats and municipalities a greater role in the sanction and disbursement of benefits to avoid procedural delays. The honorable members, continuity and consensus are the hallmark of India's foreign policy. Our relationship with our neighbors was considerably strengthened this year. The visits by Prime Minister of Bangladesh to Delhi in June 1998 and Calcutta in January 1999 contributed in better understanding with our eastern neighbor. My visit to Nepal in May 1998 and the visit of the King of Nepal to India as our special guest for this year's Republic Day celebrations consolidated the deep-rooted friendship and underlined the goodwill and warmth that characterized our ties with Nepal. The transit treaty with Nepal was also renewed. The King of Bhutan's visit to India in October 1998 provided new impetus to the close friendship and cooperation that India and Bhutan have traditionally enjoyed. Likewise, we were glad to receive a visit by the President of Maldives, with which country we have very close ties. The Prime Minister visited Pakistan on February 20, 21, 1999. On the inaugural run of the Delhi-Lahore bus service. During his visit, Prime Minister conveyed to the government
and people of Pakistan India's deep desire for peace and friendship with them, and to develop comprehensive structure of cooperation for the benefit of the two peoples. The Prime Minister and the Pakistan Prime Minister signed the Lahore Declaration, which is a landmark for the peace and security of the two countries. India and Pakistan will now work to enter into agreements to put in place far-reaching confidence-building measures. The two countries also identified new and significant areas of cooperation, such as information technology, and decided to address humanitarian issues at a ministerial level on an urgent basis. It is our hope that the Prime Minister's historic initiative for the welfare of the peoples of the two countries and his reiteration that a secure, stable, and prosperous Pakistan is in India's interest will mark a new chapter in our bilateral relations. India seeks to strengthen and deepen our historic and friendly relations with China in all spheres of mutual benefit, and is looking forward to continuing the dialogue with that country. In keeping with our policy of strengthening regional cooperation, the Prime Minister announced some bold initiatives at the SAARC summit in Colombo in July 1998 to speed up trade liberalization in the region by lifting the quantitative restrictions for SAARC countries on August 1, 1998. This demonstrates our commitment to the creation of South Asian Free Trade Area. During the visit of Sri Lanka President in December 1998, a historic free trade agreement was signed between the two countries. This will allow closer economic cooperation and can be a model for other SAARC countries. The Prime Minister participated in the 12th NAM Summit in Durban, highlighting the relevance and importance of non-alignment in international relations. The outcome of the summit vindicated India's stand on disarmament. It endorsed our proposal for an international conference, preferably in 1999, to agree before the end of the millennium on a phased program for the complete elimination of nuclear weapons within a specified time. The government considers the countries of West and Central Asia important partners. In keeping with the priority we attach to this region, the first bilateral visit abroad of Prime Minister was to Oman, with whom we are building close economic linkages. My visit to Turkey in September 1998 helped to renew the long-standing ties between our two nations. The visit of the President of Tajikistan in January 1999 to India was a useful opportunity to renew our links and share perceptions on regional development in Central Asia. Our ties with East and Southeast Asian countries and with ASEAN as an entity are developing satisfactorily. Prime Minister of Republic of Korea visited India for the inauguration of the Indian Engineering Trade Fair 1999. This is another concrete step in strengthening our economic relations with East and Southeast Asia, and we were happy to receive
a visit from the Crown Prince of Thailand. During the visit to India of Prime Minister of Russia in December 1998, both sides reaffirmed their close partnership as well as their determination to improve our ties by covering many more areas. Our ties with Bulgaria received a further impetus through the visit to India by its president in October 1998. It gives us great pleasure to receive a visit by the Governor General of Canada in March 1998. The first ever presidential visit from Estonia in February 1999 laid the foundation for a relationship full of promise. I visited Germany, Luxembourg, and Portugal in September 1998 and had very useful discussions with the leadership of those countries. In September 1998, Prime Minister Vajpayee visited France, with whom our relations now are one of shared perceptions, deep understanding, and full of promise. The visits of the President of Switzerland, the Crown Prince of Belgium, and the Prime Minister of Luxembourg in January 1999 helped bring these important European nations closer to India. The enduring foundation of India's relationship with Africa was strengthened by Prime Minister's visit to Namibia, South Africa, and Mauritius in September 1998, and to Morocco in February 1999. Prime Minister of Mauritius visited India in October 1998. We are now strengthening our relationship with Latin American and Caribbean countries. My own visit to Brazil and Peru in April-May 1998 and Prime Minister's visit to Trinidad and Tobago and Jamaica in February 1999 reflect the growing importance that my government attaches to reaching out to the Latin American countries. The need for strengthening international cooperation through a revitalized United Nations cannot be overemphasized. India has been working with other member states for the reform of the United Nations to make the organization more effective and responsive to the requirements of the member states. President's rule was imposed recently in Goa and Bihar under Article 356 of the Constitution. Goa was suffering from prolonged political instability, leading to paralysis of administration in the state. There was a near unanimous recommendation from the MLAs for dissolution of state assembly to enable early elections. Bihar has witnessed a series of massacres of innocent people in recent times, many of them targeted at Dalits. These mass killings have brought immense pain and anguish to all of us. The first duty of any government is to protect the life and property of citizens, especially those who are poor and socially oppressed. In both cases, situations had arisen in which the government of the states could not be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. Goa State Assembly has been dissolved and the Bihar State Assembly has been kept under suspended animation. Honorable members, you have the rare privilege of contributing to the success of all these diverse initiatives and efforts aimed at strengthening India in all areas of our national life. I am confident that we will use the ensuing session of Parliament as also other sessions in the year for constructive debate leading to a
successful conclusion of all the scheduled business. I wish you well in your endeavor. Jai Hind. माननीय सदस्यगण, वर्ष 1999 में संसद के दोनों सदनों के इस प्रथम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण सत्र है। संसद में बजट तथा विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नई शताब्दी और नई सहस्त्राब्दी की ओर बढ़ते हुए हमें आने वाले युग की अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप अब ठोस और निश्चित प्रयास करने चाहिए। जनता ने इस संसद को इस शताब्दी से अगली शताब्दी में प्रवेश का यह अनूठा अवसर प्रदान किया है। स्वतंत्रता के बाद की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए हमें अधूरे रह गए कार्य मिलजुल कर पूरे करने चाहिए और भावी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और दृढ़ता से करना चाहिए। हमारे गणराज्य की स्वर्ण जयंती निकट ही है। देश के चुने हुए सर्वोच्च निकाय और विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के स्तंभ के रूप में संसद का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इन प्रयासों के लिए राष्ट्रीय साधन जुटाना है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य दूरदर्शिता से और उपयुक्त निर्देशन से देकर ये उत्तरदायित्व निभाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार चलाने के लिए राष्ट्रीय एजेंडा को पूरी निष्ठा से कार्यान्वित किया जा रहा है, जो कि मिलीजुली सरकार की साझी नीति है। पिछले 11 महीनों में सरकार ने जनता के कल्याण को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास त्वरित करने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ बनाने और भारत के पड़ोसियों तथा अन्य देशों के साथ घनिष्ठ मित्रता और सहयोग विकसित करने के लिए अनेक मोर्चों पर दृढ़तापूर्वक कार्य किया है। समग्र रूप से इन प्रयासों ने देशवासियों में आत्मविश्वास की एक नई भावना भर दी है और वर्तमान और भावी चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है। गत वर्ष पोखरण में 11 और 13 मई को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करना सरकार का एक ऐतिहासिक कदम रहा है, जिससे भारत एक परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र बन गया है। सरकार ने यह कदम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात उठाया। भारत की परमाणु नीति न्यूनतम सुरक्षात्मक उपायों पर आधारित है। इस क्षेत्र में शस्त्रों की होड़ के सख्त खिलाफ है। भारत ने घोषणा की है कि किसी गैर परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र के विरुद्ध अपने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करेगा और न कभी किसी परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र के विरुद्ध इनके प्रयोग में पहल करेगा। हम जनसंहार के सभी हथियारों को संपूर्ण विश्व में शीघ्र व पूर्ण रूप से समाप्त करके विश्व शांति सुनिश्चित करने जैसे नेक मुद्दों की हमेशा हिमायत करते रहेंगे। विदेश नीति संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय सहमति बनाए रखते हुए हम सरकार का व्यापक रूप से और भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जोरदार प्रयास कर रही है। कुछ देशों ने हम पर प्रौद्योगिकी प्रतिबंध लगाए हैं। राष्ट्र इस अनुचित कार्रवाई का दृढ़ता से मुकाबला कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हम और अधिक मजबूत व आत्मनिर्भर होकर सामने आएंगे। हमारी रक्षा व विकास संबंधी ज़रूरतों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशी क्षमताओं का विकास करने में हमारे सशस्त्र बलों, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रक्षा उत्पादन यूनिटों के सम्मिलित प्रयासों के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। राष्ट्र सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के वीर जवानों और अफसरों के प्रति कृतज्ञ है, जो आतंकवादियों द्वारा छेड़े गए परोक्ष युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। सियाचिन और अन्य दूर दराज के सीमा क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा में तैनात जवानों के त्याग के प्रति देश उनका आभार प्रकट करता है। कच्छ में चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा बचाव सहायता देने जैसी आपात स्थितियों से निपटने में सिविल प्राधिकारियों की मदद करने में सुरक्षा बलों की भूमिका अनुकरणीय है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया है। भारत को मिलने वाले सैन्य, आर्थिक व राजनैतिक खतरों का सही तथा गहन विश्लेषण करने में ये कारगर साबित होगी
और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों पर एक समेकित दृष्टिकोण तैयार करने में सहायता करेगी। पंथ निरपेक्षता की जड़ें हमारे समाज और राज्य व्यवस्था में बहुत गहरी हैं, इसलिए सरकार इसे बनाए रखने के लिए पूर्णता वचनबद्ध है। हाल ही में गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में हुई कुछ घटनाएं हमारे लिए वेदना और चिंता का विषय रही हैं, लेकिन इन्हें अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के नैतिक मूल्यों की परिलक्षित नहीं करती। सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति पूर्णता वचनबद्ध है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे सभी मामलों में दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार करें। शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के संबंध में सरकार की कार्य क्षमता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों की अपेक्षा 1998 में सांप्रदायिक हिंसा में मौतों की घटनाएं सबसे कम हुई हैं। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी सरकार का मुख्य कर्तव्य है। मैं इस बात से काफ़ी संतुष्ट हूँ कि देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद तथा विघटनकारी गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया गया है। सुरक्षा बलों तथा राज्य प्रशासन के लगातार दबाव, सतर्कता और संगठित कार्रवाई तथा लोगों के सक्रिय सहयोग से जम्मू कश्मीर में 1998 के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति में ऐसा सुधार आया है कि स्थिति का बदलना साफ दिखाई देता है। अन्य बातों के साथ साथ ये इससे भी परिलक्षित होता है कि यहाँ पर्यटकों का आना जाना पुनः आरंभ हो गया है, जो पिछले दशक में लगभग बंद हो गया था। सरकार इस राज्य में शांति को बढ़ावा देने, सामान्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को पुनः बहाल करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि स्थिति सामान्य हो जाने पर बहुत से कश्मीरी अपने घरों तथा परिवारों में शीघ्र लौट जाएं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। वाहनों, उपकरणों, हथियारों व गोला बारूद की आपूर्ति बढ़ाकर राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया गया है, ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास के लिए सहायता बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम 1983 को निरस्त करने पर विचार कर रही है। इम्फाल में राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने का निर्णय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में भावनात्मक एकता बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया तीव्र करने की अनेक संभावनाओं का द्योतक है। अनिवासी भारतीय जो विश्व में कहीं भी रह रहे हैं, भारतीय परिवार का एक हिस्सा हैं। भारत के साथ उनके भावात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंध हमें बहुत अधिक शक्ति प्रदान करने का स्रोत हैं। सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO के लिए कार्ड योजना को स्वीकृति दे दी है। इससे भारतीय मूल के लोगों को जो अन्य देशों के नागरिक हैं, वीज़ा मुक्त प्रवेश तथा अन्य सुविधाओं की अनुमति हो सकेगी। बेरोजगारी हटाओ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में त्वरित व संतुलित आर्थिक विकास की एक पूर्वापेक्षा है। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी की वजह से अत्यधिक प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ा है। जैसा कि ये मंदी दक्षिण पूर्व एशिया सहित विश्व भर के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आई तीव्र कमी और बाजार संकटों के रूप में दिखाई दी है। इसके परिणाम स्वरूप उभरते हुए बाजारों में पूंजी प्रवाह की कमी आई है। देश की अर्थव्यवस्था में चली आ रही कई बाधाओं से बाह्य चुनौतियां बढ़ी हैं। इन बाह्य और आंतरिक कठिनाइयों के बावजूद अर्थव्यवस्था काफ़ी ठीक रही है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर विकासशील देशों में सबसे अधिक होनी चाहिए। मुद्रा बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय रुपये की विनिमय दर नियंत्रण योग्य विनिमय सीमा के अंदर स्थित बनी रही है। 17 फरवरी 1999 की स्थिति के अनुसार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। रिसर्जेंट इंडिया बांडों की भारी खरीद होने से 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से अनिवासी भारतीयों की भारत के प्रति निरंतर वचनबद्धता को दर्शाता है। इस समय केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही अत्यधिक वित्तीय दबाव में हैं।
हाल के वर्षों में सामान्य सरकारी घाटे को में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति संबंधी संभावना के साथ साथ ब्याज दरों, पूंजी निवेश और विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए राजस्व और वित्तीय घाटे में कमी लाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए व्यर्थ और कम प्राथमिकता वाले व्यय पर कड़ा नियंत्रण लगाकर और लागत वसूली संबंधी उपयुक्त नीतियां अपनाकर संसाधन जुटाने के भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार ने औद्योगिक संपत्ति और पेटेंट सहयोग संधि के संरक्षण के लिए पेरिस समझौता स्वीकार कर लिया है। इससे सूचना प्राप्ति में वृद्धि होने से औद्योगिक वातावरण में सुधार होगा, भारतीय आविष्कारों को बेहतर संरक्षण प्राप्त होगा तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसी कारण बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक 1998 का उद्देश्य बीमा क्षेत्र को सुदृढ़ करना और विश्वव्यापीकरण से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने में इसे समर्थ बनाना है। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार प्रगति कर रहा है। इस वर्ष इनसेट 2E के साथ ही दूरसंवेदी उपग्रह IRSP-4 छोड़ा जा रहा है। PSLV की अगली उड़ान में कोरिया के किटसेट तथा जर्मनी के टुबसेट को भी छोड़ा जाएगा। ये हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक अन्य विशेष उपलब्धि है। इस क्षेत्र में सफलता से बेहतर दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं, सुदूर शिक्षण, भूमि और जल संसाधनों के मानचित्रण तथा फसल संबंधी पूर्वानुमान के लिए बड़ी आशाएं हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है तथा हमारी जनसंख्या की जीविका का साधन है। मैं मेहनती किसानों को हार्दिक बधाई देता हूं, जो अनेक कठिनाइयों के बावजूद कृषि उत्पादन बढ़ाने और देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहे हैं। मुझे सदस्यों को ये सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है 1998-99 में 720 लाख टन के संभावित दुग्ध उत्पादन से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन जाएगा। आशा है कि खाद्यान्नों, दालों और अन्य फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये गर्व की बात है कि भारत अब सर्वाधिक गेहूं उत्पादक पहले 3 देशों की श्रेणी में आ गया है। सरकार कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति बना रही है। इस नीति से विशेषकर छोटी और मध्यम परियोजनाओं के मार्फत सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा, छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंध और प्रौद्योगिकी व संस्थागत परिवर्तनों के द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। विशेष बल देश के विस्तृत वर्षा पोषित क्षेत्रों तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर होगा। कृषि सहकारी समितियों और अन्य ग्रामीण ऋण संस्थाओं का विस्तार करने एवं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि वे आर्थिक उदारीकरण के अवसरों का लाभ उठा सकें। नई नीति का उद्देश्य बागवानी, पुष्प कृषि, औषधीय पौधों और वन रोपण में विशेषकर इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन अधिक से अधिक करना है। यह प्रकोष्ठ एक उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य नियंत्रण बोर्ड को सचिवालयी सेवा दे रहा है। मूल्य स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस बोर्ड की साप्ताहिक बैठक होती है। जमाखोरी और कालाबाजारी को अधिक कारगर ढंग से रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक विधेयक संसद के इस सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। जल का इष्टतम उपयोग हमारी आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जल के अनुचित उपयोग से आर्थिक नुकसान होने के अलावा भूमि व पर्यावरण का स्तर कम हो सकता है तथा सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इस समय एक राष्ट्रीय आयोग बहुउपयोग के लिए जल संसाधनों के विकास की एक समन्वित योजना बना रहा है। इसकी रिपोर्ट इस वर्ष प्राप्त होने की आशा है, जिसमें देश के विविध जल संसाधनों के एकीकृत और कुशल प्रबंध के लिए अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपायों की सिफारिश की जाएगी। काफ़ी समय से लंबित कावेरी जल विवाद के संबंध में पिछले वर्ष सहमति बनने में हुई प्रगति सहयोगी और राष्ट्रीय भावना की विजय है। इस सफलता का महत्व ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाने से अन्य लंबित अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे की संभावना में है। इसी वजह से कई बड़ी विकास योजनाएं रुकी हुई हैं। सरकार आधारभूत संरचना के त्वरित विकास को उच्च प्राथमिकता देती है,
जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के तत्वावधान में गठित आधारभूत संरचना संबंधी कार्यदल ने सिलचर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाले पूर्व पश्चिम मार्ग तथा कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले उत्तर दक्षिण मार्ग सहित एक 6 लेन वाली राष्ट्रीय एकीकृत राजमार्ग परियोजना के निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाली पिछली स्वर्णिम चौमार्गीय परियोजना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयुक्त स्थानों के बीच एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद इस सर्वाधिक महत्वाकांक्षी आधारभूत संरचना पर कार्य पहले ही शुरू हो गया है। देश में कई स्थानों पर साथ साथ इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएंगे। बिल्ड ऑन ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सकेगी। आधारभूत संरचना संबंधी कार्य दल ने राष्ट्रीय एकीकृत परिवहन नीति का प्रारूप बनाया है, जिससे रेलों, सड़कों, बंदरगाहों, विमानपत्तनों और अंतर्देशीय जल मार्गों के बीच सहयोग पूर्वक किए जाने वाले काम से इष्टतम प्रतिलाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने देश में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण व विस्तार करने का एक मुख्य कार्य करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 5 विमानपत्तनों मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर का निगमीकरण किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी 21वीं सदी में भारत के लिए विकास का एकमात्र सबसे बड़ा अवसर है। भावी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तथा समाज की पूर्ण इमारत इसकी नींव पर निर्भर करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व स्थापित करने में भारत की नैसर्गिक श्रेष्ठता आज सर्वविदित है। ये पहचान भारत व विदेश में कार्यरत हमारे सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों तथा उद्यमियों द्वारा प्राप्त शानदार सफलता पर आधारित है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यदल की सिफारिशों में परिणाम स्वरूप सॉफ्टवेयर के विकास को बहुत अच्छी बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए हैं, जिससे कि 2008 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। भारत को हार्डवेयर डिज़ाइन करने, बनाने तथा निर्यात करने का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए एक कार्य योजना पर भी विचार किया जा रहा है। पहली बार देश में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नीति की घोषणा की गई है। साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, इंटरनेट को शीघ्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने, इंटरनेट पर विशेषकर भारतीय भाषाओं में भारतीय कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने, प्रशासन, बैंकिंग, वाणिज्यिक क्षेत्र और जन उपयोगी सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल तथा अनेक राज्यों में वायर्ड विलेजेस परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रमुख कदम उठाने की योजना बना रही है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के सपने साकार करने में दूरसंचार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। तदनुसार सरकार ने दूरसंचार संबंधी एक दल का गठन किया है, जो एक नई दूरसंचार नीति को अंतिम रूप दे रहा है। इस नीति में अन्य बातों के साथ साथ कंप्यूटर, दूरसंचार, दूरदर्शन, मल्टीमीडिया तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान को इस्तेमाल में संयुक्तिकरण को ध्यान में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की बड़े पैमाने पर उपलब्धता, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तीव्र गति से कनेक्टिविटी लाना और यह सुनिश्चित करना होगा कि दूरसंचार सेवाएं वहन की जा सकें। इन उद्देश्यों को अधिक मजबूत नियामक ढांचा सृजित करके एक बेहतर प्रतियोगी वातावरण में प्राप्त किया जाएगा। लंबित पड़ी अनेक विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने में आ रही अड़चनों को दूर करने के बारे में सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। अनेक स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय स्रोत बहुत जल्दी औपचारिक रूप से तय हो जाएंगे, जिससे उनका निर्माण कार्य शीघ्र किया जा सकेगा। हाल ही में सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बिजली मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें विशेष रूप से आधारभूत संरचना के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हुई त्वरित प्रगति की चर्चा की गई। मुझे ये उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिकाधिक राज्य सरकारों ने
विनियामक आयोग का गठन करने अपने विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करने के लिए उपाय करने आरंभ कर दिए हैं, ताकि पारेषण और वितरण संबंधी क्षतियां कम की जा सकें और प्रत्याशित पूंजी निवेश प्रवाह बढ़ाया जा सके। इस बात पर राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए कि चूंकि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवसाय कार्यकलाप है, इसलिए प्रयोक्ता प्रभारों की पूरी वसूली की जानी चाहिए। यदि कम प्रभारों के लिए सहमति बनाई जाती है तो इसके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भारत परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति वचनबद्ध है। कैगा परमाणु ऊर्जा यूनिट 2 और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 3 पर काम चल रहा है और आशा है कि ये यूनिटें इस वर्ष क्रांतिक हो जाएंगी। हमारे द्वारा निर्मित तीसरे और सर्वाधिक बड़े पुनर्संसाधन संयंत्र कल्पकम पुनर्संसाधन संयंत्र को सितंबर 1998 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता आज भी कायम है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग में भारत का स्थान अब विश्व में चौथा है। इसके अलावा भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा देश अपनी चीनी मिलों में विश्व के सबसे बड़े खोई आधारित सह उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रत्येक भारतीय परिवार का सपना है कि उसका अपना एक घर हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नई आवास नीति 1998 बनाई है, जिसके तहत एक वर्ष में 20 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे हमारे इस्पात, सीमेंट और निर्माण सामग्री वाले उद्योगों के बढ़ावे के साथ साथ कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। शामिल हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद आवास उद्योग के रास्ते में आने वाली मुख्य अड़चनों को दूर कर दिया गया है और अन्य को दूर किया जा रहा है। सरकार ने भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष के सृजन का निर्माण किया है। ये योजना 1 अप्रैल 1999 को आरंभ होगी। कृषि मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही अलग से एक कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया जाएगा। लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और हाथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं। लघु क्षेत्र की सहायता करने के लिए लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम 1993 को संशोधित किया गया है। इस कार्यक्रम पर अतिरिक्त बल देने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना भी संशोधित की गई है। शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में उद्योग और अफसरशाही नियंत्रण से मुक्त करने की प्रतिबद्धता का उल्लेख है। सरकार ने कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम उत्पादों व चीनी जैसे उद्योगों और कुछ बल्क औषधियों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। इसने वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और उन निजी कंपनियों जिनकी पिछली साख अच्छी रही है कि परियोजनाओं के लिए स्वतः स्वीकृति की अनुमति देकर प्रौद्योगिकी आयात को भी उदार बनाया है। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की संरचना, पुनर्वास, विनिवेश और नीतिगत बिक्री करके उसका सुधार भी कर रही है। अलग से एक मंत्रिमंडल समिति विनिवेश और योजनाओं की पुनर्संरचना का निरीक्षण करेगी और शीघ्रता से निर्णय लेगी। 3 दशकों के बाद दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई है, जो कि संगठित क्षेत्र में मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत करने और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के न्यूनतम संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक कानूनी दायरा प्रदान करने के सुझाव देगा। आयोग उभरते आर्थिक पर्यावरण पर विचार करेगा, जिसमें ऐसे तीव्र प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण काम के तरीकों, समय और दशाओं में शीघ्र बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। ये मौजूदा कानूनों में परिवर्तनों की सिफारिश करेगा ताकि उन्हें भावी श्रमिक बाजार की आवश्यकताओं का अनुरूप बनाया जा सके। यह सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी व उत्पादकता के बीच तालमेल से संबंधित उपायों की प्रभावशीलता में सुधारों की भी सिफारिश करेगा। ये महिलाओं और विकलांग कामगारों के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों तथा सुविधाओं का भी अध्ययन करेगा। अपने नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है। साक्षरता, शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल क्षेत्र में निवेश करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है,
क्योंकि इससे हमारे नागरिकों का जीवन स्तर प्रभावित होता है और भारत की मानव विकास तालिका में सुधार होता है। पिछले बजट में सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में काफ़ी वृद्धि की है। यह प्रतिबद्धता बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त सरकार समाज के सबसे गरीब वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए और उपाय करेगी। हाल के वर्षों में स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को अपार सफलता मिली है। इस सफलता को देखते हुए अब भारत को चाहिए कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियत लक्ष्य के अनुरूप अर्थात सन 2000 तक पोलियो को जड़ से मिटाने का लक्ष्य प्राप्त कर ले। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए परिवार कल्याण विभाग ने प्रजनन शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयुर्वेद को शामिल किया है। राष्ट्र विशेष रूप से गंभीर स्वास्थ्य चुनौती अर्थात तेजी से फैलते हुए एड्स का सामना कर रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नीति तथा राष्ट्रीय रक्त नीति का एक मसौदा तैयार किया है। इससे इस जानलेवा बीमारी के तेजी से बढ़ने पर रोक लगाई जा सकेगी। घरों तथा अस्पतालों में पड़े एड्स से पीड़ित लोगों की देखभाल से संबंधित सेवाओं में सुधार किया जा सकेगा और एक स्वस्थ सामाजिक आर्थिक वातावरण बनाया जा सकेगा ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग HIV संक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। मादक पदार्थों की लत भी HIV फैलने का एक प्रमुख कारण है। सरकार नशा मुक्ति और नशे से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रम चलाने के लिए भी वचनबद्ध है। गत वर्ष डॉक्टर अम्बेडकर जन्मदिवस पर कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रखा गया था। अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की प्राधिकृत पूंजी तिगुनी से भी अधिक कर दी गई है। उनके त्वरित आर्थिक विकास के लिए और कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने 6 राज्यों में ग्रामीण महिलाओं के विकास और अधिकारिता के लिए ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना आरंभ की है। महिलाओं की अधिकारिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन बाल विकास के क्षेत्र में एक नया प्रयास होगा। सरकार ने अधिकांश वृद्ध लोगों की उभरती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी स्वास्थ्य देखभाल, आवास, कल्याण, जीवन संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है। विकलांगों के बीच कार्य कर रहे पुनर्वास व्यवसायिकों के प्रशिक्षण में के मानकीकरण और विस्तार करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का पुनर्गठन किया गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार प्रधानमंत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 15,000 बच्चों को शामिल किया गया है। बाद में और अधिक बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क, अंगघात, मानसिक रूप से विक्षिप्त और कई तरह के विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना संसद के वर्तमान सत्र में पेश किए जा रहे विधेयक के पारित होते ही की जाएगी। हालांकि सामाजिक क्षेत्र का विकास केवल वित्तीय संसाधनों की बढ़ोतरी पर ही निर्भर नहीं करता। प्रशासनिक और प्रबंधकीय संसाधनों का बेहतर और वचनबद्धतापूर्ण इस्तेमाल भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर सरकारी तंत्र को सुग्राही बनाने की काफ़ी आवश्यकता है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब तक संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं के कार्यान्वयन में लोगों को शामिल करने के लिए भागीदारीपूर्ण रवैया नहीं अपनाएंगे, तब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होगी। उच्च शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए किए गए सतत निवेश का लाभ मिलना आरंभ हो गया है। अनेक भारतीय युवा भारत और विदेश दोनों जगह उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। खेलों में भी तेजी आ रही है। पिछले वर्ष एशियाई खेलों में मिले पदक 1982 के बाद से सर्वाधिक हैं, जिसमें हॉकी में प्राप्त किया गया स्वर्ण पदक भी शामिल है। लगभग 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले हमारे समाज में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमें इन प्रतिभाओं का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए गहन प्रयास करने चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के खेल स्तर को सुधारा जा सके। सरकार ने प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठित किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।
जिस पर विचार किया जा रहा है। सरकार सूचना की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार विधेयक प्रस्तुत करने की भी योजना बना रही है। संसद के दोनों सदनों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार पर कई बार चर्चा की गई है। सरकार ने चुनावों के लिए राज्यों द्वारा धन की व्यवस्था करने तथा अन्य संबंधित मामलों में सुझाव देने के लिए संसद के वरिष्ठ तथा आदरणीय सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति ने 14 जनवरी 1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने सुझाव दिया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को सरकार की ओर से वस्तु रूप में कुछ सहायता प्रदान की जाए। सरकार सभी पार्टियों से परामर्श करके अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी। भारतीय लोकतंत्र में नवचेतना लाने की चुनौती का सामना करने के लिए पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है, अतः शासन की गुणवत्ता का अंदाजा सरकार और सबसे निचले स्तर के नागरिकों के बीच के संबंधों से ही लगाया जाएगा। इन पंचायतों की कार्य प्रणाली में सुधार करने, विशेषकर बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए इसके सदस्यों को शिक्षित करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता और गुंजाइश बहुत है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके अनेक योजनाओं की पुनर्संरचना कर रहा है। इससे लाभों की स्वीकृति और इनके वितरण में प्रक्रिया संबंधी देरी से बचने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को और अधिक अधिकार मिल सकेंगे। माननीय सदस्यों, निरंतरता और सहमति भारत की विदेश नीति के प्रमाणक हैं। इस वर्ष पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध काफ़ी सुदृढ़ हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की जून 1998 में दिल्ली और जनवरी 1999 में कलकत्ता यात्राओं ने पूर्व में स्थित हमारे पड़ोसी देश के साथ बेहतर समझबूझ कायम करने में योगदान दिया है। मई 1998 में मेरी नेपाल यात्रा इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर नेपाल नरेश की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और भी अधिक सुदृढ़ हुई और नेपाल के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सद्भावना और गर्मजोशी को रेखांकित किया गया है। नेपाल के साथ पारगमन संधि को भी आगे बढ़ा दिया गया है। भूटान नरेश की अक्टूबर 1998 में भारत यात्रा से भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के पारंपरिक संबंधों को नई गति मिली है। इसी प्रकार मालदीव देश के साथ हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। वहाँ के राष्ट्रपति की हमारे देश की यात्रा पर उनका अभिनंदन करते हुए हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने 20-21 फरवरी 1999 को दिल्ली लाहौर बस सेवा के उद्घाटन के अवसर पर पाकिस्तान की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सरकार एवं जनता को भारत की उनके प्रति शांति और मैत्री की भावना को प्रकट किया और चाहा कि दोनों देशों की जनता के हित में साथ साथ काम करने का विस्तृत ढांचा विकसित हो। प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो दो देशों के बीच शांति और सुरक्षा की एक ऐतिहासिक घटना है। भारत और पाकिस्तान अब आपसी विश्वास बढ़ाने हेतु समझौते करने की दिशा में कार्य करेंगे। दोनों देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सहयोग के नए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत की और मंत्रियों के स्तर पर मानवीय हित से जुड़े मुद्दों को शीघ्रता से हल करने का निर्णय लिया। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक पहल और उनके इस बात के दोहराने के लिए एक स्थिर, सुरक्षित और खुशहाल पाकिस्तान भारत के हित में है, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगा। भारत आपसी हित के सभी क्षेत्रों में चीन के साथ अपने ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ और घनिष्ठ बनाना चाहता है। उस देश के साथ हमारी वार्ता आशापूर्वक जारी है। क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की हमारी नीति के मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने जुलाई 1998 में कोलंबो में संपन्न दक्षेश शिखर सम्मेलन में 1 अगस्त 1998 को दक्षेश देशों के लिए मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाते हुए कुछ क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण को गति प्रदान करने संबंधी कुछ ठोस प्रयासों की घोषणाएं की। यह दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की हमारी वचनबद्धता को दर्शाता है। दिसंबर 1998 में श्रीलंका के राष्ट्रपति की यात्रा के समय दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार पर
हस्ताक्षर किए गए। इससे आर्थिक सहयोग में और निकटता आएगी और अन्य दक्षेण देशों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने डरबन में कूटनिरपेक्ष देशों के 12वें सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और महत्व को उजागर किया। सम्मेलन के निष्कर्षों में निरस्त्रीकरण के बारे में भारत के पक्ष को न्यायसंगत ठहराया है और इस सहस्त्राब्दी के समाप्त होने से पूर्व एक निश्चित समय सीमा में परमाणु शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन के एक चरणबद्ध कार्यक्रम पर सहमति बनाने के लिए संभवतः 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये सरकार पश्चिमी तथा मध्य एशिया के देशों को अपना महत्वपूर्ण सहभागी मानती है। इस क्षेत्र को दी जाने वाली प्राथमिकता को देखते हुए प्रधानमंत्री की पहली विशेष यात्रा ओमान राज्य की थी, जिसके साथ हम घनिष्ठ आर्थिक संबंध बना रहे हैं। सितंबर 1998 की मेरी तुर्की यात्रा से दोनों राष्ट्रों के बहुत पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में सहायता मिली है। जनवरी 1999 में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति को भारत यात्रा से दोनों देशों के हमारे संबंधों को पुनर्जीवित करने तथा मध्य एशिया में क्षेत्रीय विकास पर अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराने का अच्छा अवसर मिला है। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तथा सांस्थापिक रूप से आसियान के साथ हमारे संबंध संतोषजनक ढंग से विकसित हो रहे हैं। भारत इंजीनियरिंग व्यापार मेला 99 के उद्घाटन के लिए कोरिया गणराज्य के प्रधानमंत्री भारत आए। यह पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और ठोस कदम है। हमें थाईलैंड के युवराज की इस देश की यात्रा के दौरान उनका अभिनंदन करते हुए प्रसन्नता हुई। दिसंबर 1998 में रूस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने कई विषयों पर वार्ता करके और अधिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहभागिता और संबंधों को सुधारने के हमारे दृढ़ संकल्प को और अभिपुष्ट किया है। अक्टूबर 1998 में बल्गारिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से बल्गारिया के साथ हमारे संबंध और मजबूत हो रहे हैं। मार्च 1998 में कनाडा के गवर्नर जनरल की हमारे देश की यात्रा के दौरान उनका स्वागत करते हुए बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। फरवरी 1999 में पहली बार इस्टोनिया के राष्ट्रपति द्वारा की गई भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच आशापूर्ण संबंधों की नींव पड़ी। सितंबर 1998 में मैं जर्मनी, लक्समबर्ग और पुर्तगाल गया था और इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मेरा बहुत ही उपयोगी विचार विमर्श हुआ। सितंबर 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने फ्रांस की यात्रा की, जिनके साथ हमारे ऐसे संबंध हैं कि हम अपने अनुभव, गहरी सोच और विश्वास का आदान प्रदान कर रहे हैं। जनवरी 1999 में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, बेल्जियम के क्राउन प्रिंस तथा लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री की यात्राओं से इन महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों को भारत के निकट लाने में बहुत मिली है। प्रधानमंत्री की अगस्त सितंबर 1998 में की गई नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तथा मॉरिशस की यात्रा तथा फरवरी 1999 की मोरक्को यात्रा से भारत और अफ्रीका के संबंधों में और प्रगाढ़ता आई है। अक्टूबर 1998 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत आए। अब हम लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। अप्रैल मई 1998 की मेरी ब्राज़ील व पेरू यात्रा तथा फरवरी 1999 की प्रधानमंत्री की त्रिनिडाद टोबैगो और जमैका यात्रा से ये याद होता है कि मेरी सरकार लैटिन अमेरिकी देशों को कितनी महत्ता दे रही है। सुदृढ़ संयुक्त राष्ट्र के जरिए पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ इसमें सुधार के लिए कार्य करता रहा है, ताकि ये संस्था सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक कारगर व जवाबदेह बन सके। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हाल ही में गोवा और बिहार में राष्ट्रीय शासन लागू किया गया था। गोवा में लंबे समय से राजनैतिक अस्थिरता चल रही थी, जिसके कारण राज्य प्रशासन पंगु हो गया था। विधायकों की लगभग आम सहमति से राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई थी, ताकि शीघ्र चुनाव कराया जाए। बिहार में हाल में कुछ निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या का सिलसिला जारी था, जिनमें से अनेक दलित थे। इन सामूहिक हत्याओं ने हम सभी दुखी और खिन्न हुए हैं। किसी भी सरकार का पहला दायित्व नागरिकों, विशेष रूप से गरीब उत्पीड़ित लोगों की जान माल की रक्षा करना है। दोनों मामलों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं जिनसे
इन राज्यों की सरकार संविधान के बंधों के अनुरूप नहीं चल पाई। गोवा विधानसभा को बंद कर दिया गया और बिहार विधानसभा को निलंबित रखा गया। माननीय सदस्यों, भारत को सभी क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करने की दिशा में किए गए विविध प्रयासों और कोशिशों को सफल बनाने में आपका विशेष योगदान रहा है। मुझे विश्वास है कि आप वर्ष के अन्य सत्रों की तरह संसद के आगामी सत्र वर्ष के दौरान अन्य सत्रों में भी ऐसी रचनात्मक परिचर्चा करेंगे जिससे सभी निर्धारित विधायी और बजट संबंधी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न की जा सकें। मैं आप सभी को इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। The Honourable President, Shri Narayanan, departing from the Central Hall of Parliament after addressing the joint session of Parliament, the fourth session of the 12th Lok Sabha. संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति महोदय अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ केंद्रीय कक्ष से प्रस्थान करते हुए इसी से अंत होता है दूरदर्शन द्वारा आप तक पहुंच रहे इस विशेष प्रसारण का, और अपनी पूरी टीम की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हुए थोड़ी देर में आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।